Battle for Tamil Nadu is only intensifying. Home Minister Amit Shah is in poll-bound Tamil Nadu on a 2-day visit. And earlier today, addressing a gathering, Home Minister Shah launched a scathing attack on the MK Stalin-led DMK government. He accused MK Stalin of prioritizing son's elevation rather than development of the state. He also alleged that Hindu sentiments are being attacked during DMK government. Meanwhile, Congress targets Home Minister Shah over his Tamil Nadu visit and stated that BJP will not get any seats in Tamil Nadu Assembly elections in 2026. तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। हिंदुओं के प्रोसेशन पर स्टे लगा दिया जाता है, हिंदुओं के मूर्ति विसर्जन पर भी स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। मैं स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, हमारे संविधान की मर्यादाओं को आपने हिंदू समाज पर अत्याचार कर कर तोड़ने का काम किया है। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। They cannot claim that we are against Hindus. The party itself was started for Hindus. That they should understand. If anybody knows the politics here, they will understand that Amit Shah does not know the politics of Tamil Nadu. That is what his speech proves. They cannot claim that they are for Tamil Nadu. They have acted as anti-Tamils and they are doing it. So whatever they speak, the people of Tamil Nadu will understand and throw them out. They can never form a government in the Tamil Nadu. That much the BJP should understand because of their anti-Tamil mindset, I am telling this. All right, in other news, the battle for the local body polls in Mumbai is heating up. The Thackeray cousins, Uddhav and Raj, who have now joined hands for the Mumbai civic body polls, released their manifesto today. The Thackerays have promised affordable homes, a pollution-free Mumbai, property tax waiver, mandatory Marathi lessons in all schools, among others. But poll promises were not all. Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray hit out at Mahayuti government and claimed that after stealing votes, they are now stealing candidates. Uddhav Thackeray also asserted that the mayor in Mumbai will be a Marathi. His cousin and MNS chief Raj Thackeray too slammed the Mahayuti alliance and said that they are turning Maharashtra into Uttar Pradesh and Bihar. मी डोमकावळे एवढ्यासाठी म्हणालो, जे मराठी होणार हिंदू होणार म्हणतायत ते शिवसेनेतलेच बरेचसे गद्दार तिकडे गेले होते. ते कोण आहेत धर्माने? ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलं ते धर्माने कोण आहेत? मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. आतापर्यंत हा मराठीच शिवसेनेने महापौर केलेला आहे. पण भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी उपमहापौर काय केले होते हा त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारावा. आपल्या देशातली लोकशाही संपून झुंडशाही सुरू झाले असंच आता वातावरण आहे. म्हणजे आम्ही त्यांची मतचोरी पकडली. मतचोरी पकडल्यानंतर त्यांनी आता उमेदवारांची पळवापळवी सुरू केली. साम दाम दंड भेद म्हणजे एवढे निगरगट्ट आणि कोडगे राज्य करते यापूर्वी महाराष्ट्राला तरी लाभलेले नव्हते. पेशव्यांच्या काळामध्ये मला असं वाटतं 3 संस्थानं उभी राहिली. त्यातलं एक गुजरातचं मधलं गायकवाडांचं, शिंदेचं म्हणजे सिंधिया ज्यांना म्हणतो आपण ते, आणि तिसरं होळकरांचं. बरोबर. जे साम्राज्य उभं राहिलं ते बडोद्याचं साम्राज्य उभं राहिलं, जे मराठेशाहीचं साम्राज्य आहे. बरोबर. मग त्या बडोद्यामध्ये सगळे मेयर गुजराती का होता? तो हा महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक शहरामधला महापौर हा मराठीच होणार. इथे कसला हिंदू मराठी करताय तुम्ही? मी गेले 10 वर्ष अनेक वर्ष मी तुम्हाला सांगतोय की या महाराष्ट्राचा हे यूपी बिहार करतायत.
उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये ज्या प्रकारचं राजकारण केलं जातंय त्या प्रकारचं राजकारण महाराष्ट्र हा वेगळा सुसंस्कृत महाराष्ट्र आहे. मी नेहमी सांगतो की महाराष्ट्राने देशाला दिशा दाखवलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्राचं अशा प्रकारे वाटोळं करणं, महाराष्ट्रातल्या येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांचं वाटोळं करणं, महाराष्ट्रामध्ये जे येऊ इच्छितात राजकारणामध्ये त्यांची विचारसरणी बदलणं, हे मला असं वाटतं महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. मुंबई का घन कचरे का विस्थापन नहीं हो रहा है. मुझे वायु प्रदूषण के कारण आज सर्दी खांसी हो रही है. सबको, इनको भी है, सबको है. तो सोचो. और दूसरा मेरा बात, मुंबई में आज पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, तो इनके ऊपर भी कभी तो बात करो. जहाँ धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठ के विवाद न करते हुए मुंबई कर बन के बात मुंबई की करो. 3 सीटों पे हमने लोगों को पुरस्कृत किया है. टोटल 97 सीटें हैं, जिसमें अधिकांश सीटें हमारी बीजेपी और शिंदे साहब के पार्टी के खिलाफ लड़ रही है. शिवाजी नगर के 3 वार्डों पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जहाँ पे 90% माइनॉरिटीज है. हम मदनपुरे में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम भिंडी बाजार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम मालवनी के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे. तो बंटवारे का सवाल ही नहीं होता. हम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजा आएगा तो देखेंगे कि लड़ाई हमारी शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ है. मी असं म्हणतो की उद्धव मामूंचा जर महापौर मुंबईमध्ये झाला तर मुंबईचं पाकिस्तान होईल. मी असं म्हणतो की उद्धव मामूंचा जर महापौर मुंबईमध्ये झाला तर मुंबईचं पाकिस्तान होईल. Meanwhile, MNS chief and Uddhav Thakere's cousin Raj Thakere visited Sena Bhavan after 20 long years since family's fallout in 2005. Remember, this comes after both the brothers Uddhav and Raj decided to reunite for BMC polls in the state. Our next report, Tenikimo. After 20 long years, Raj Thakere is back at Shiv Sena Bhavan. Once his political home, his power center, his daily adda. Before the split, Raj Thakere was a familiar presence inside this building. Meetings, strategy sessions, fiery speeches. Shiv Sena Bhavan is where Raj's political identity was forged. Nephew of Shiv Sena founder Bal Thakere, Raj was once widely seen as the party's natural heir. But internal politics and the rise of cousin Uddhav Thakere changed the power balance. Sidelined and frustrated, Raj walked out in 2005 and went on to form the Maharashtra Navnirman Sena, making his mark with Marathi pride and aggressive street politics. MNS saw early success, winning assembly seats and municipal power in cities like Nashik. But over time, the momentum faded. Electoral setbacks followed and loyal leaders drifted away. Raj's politics also evolved, from backing Narendra Modi in 2014, opposing him in 2019, to once again supporting the BJP in 2024. Now, after years of rivalry and political ups and downs, Raj Thakere is stepping back into the very building he once ruled, this time as an ally, not a rival. Raj Thakere's return to Shiv Sena Bhavan is not just symbolic. It marks the closing of a 20-year political circle and the beginning of a new chapter in Maharashtra politics. Bureau Report, NDTV. Well, the fallout of Mustafizur Rahman's IPL exit has now turned into a political flashpoint. The opposition has now trained its guns on the BCCI, questioning the handling of the situation and the diplomatic messaging around it. Reacting to the controversy now, Congress MP Shashi Tharoor has said that Dhaka's response should not perhaps come as a shock. Meanwhile, Bengal Minister Manoj Tiwari has said
That until justice served to the persecuted Hindus in Bangladesh, no match should be played with the country. Take a listen to all these reactions that have been coming in. At such a delicate moment, this seems to me to have been an extremely unfortunate and unwise decision. Because what it implies is that we are politicizing even such a simple aspect as a private cricket game. Mustafizur Rahman was on the approved pool. So the BCCI had already once approved him to now pull him back after he has been recruited and so on seems to me to be in very bad taste. बांग्लादेश के साथ कभी सीरीज नहीं खेलना चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, एशिया कप के पहले और विश्व कप के इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में कि पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं खेलना चाहिए। तब मैंने ये भी कहा था कि ये निर्णय बीसीसीआई को लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ाई करते हैं, हमारे जवान मरते हैं। जो ये प्लेयर्स के ऊपर निर्णय लिया गया, मैं सहमत हूँ इसके साथ। और आने वाले जितने भी वर्ष हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है उनके परिवार को, तब तक उन लोगों के कोई भी प्लेयर्स को लेना नहीं चाहिए और उनके देश के विरुद्ध भी कोई भी सीरीज नहीं खेलना चाहिए, चाहे बायलैटरल हो चाहे कोई दूसरा भी हो। महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे थे कांग्रेस बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक तो एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। समझता हूँ कि बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को माराम थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बट लेकिन स्पोर्ट्स में एक अलग है। बट लेकिन अब जैसा कि जो डिसीजन होता है, बोर्ड का जो डिसीजन है, मेरे ख्याल में सब लोग के साथ बैठ के और मिनिस्ट्री के साथ भी बात करके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके ही ये डिसीजन लिया होगा। जो पूल बना था उसकी लिस्ट किसने तैयार की थी? लिस्ट तो बीसीसीआई ने तैयार किया था और उसके अंदर 7 बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, किसी को नहीं उठाया गया। और लिस्ट था तो केकेआर ने उठाया और वहां कोई बैठ करके शाहरुख खान तो नहीं उठा रहे थे। लिस्ट में तो बीसीसीआई ने दिया था ना, तो जब बीसीसीआई ने लिस्ट में दिया तो फिर कोई भी उठा सकता है। जब रिश्ते नहीं बांग्लादेश से ठीक हैं तो फिर आपने उनको लिस्ट में क्यों डाला? और लिस्ट में डाला और जब एक बार पिक हो गया तो फिर आप अब उसको कह रहे हैं आप खुद निकालिए ना, केकेआर क्यों निकालेगा? आखिर बीसीसीआई के निर्देश के बाद अगर वो बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो शाहरुख खान को शर्मसार नहीं होना चाहिए कि इस समय जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं और वहां की सरकार से लगातार भारत सरकार के दबाव के बावजूद भी जो सुरक्षा देनी चाहिए वो सुरक्षा नहीं दी जा रही। विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी चल के गए हैं, सरकार आश्वस्त वहां कर रही है। इस समय जो देश की भावना है और इन हालात में क्या उनको बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदना चाहिए था? On that note, slipping into a very short break, but come right back. Lots landed for you here on NDTV 24/7. The First Lady of Venezuela were captured, brought to the US on a warship. Nicolas Maduro has now been transferred to the custody of Metropolitan Detention Center in Brooklyn. US struck Venezuela in multiple airstrikes and then captured Maduro and his wife before bringing them to New York through a warship and then on a flight. Maduro has now been taken to a detention center and people could be seen celebrating outside it. Meanwhile, demonstrations have erupted in Venezuela over the dramatic capture. Venezuela's vice president has now demanded Maduro's release, warning the country is ready to defend its resources. Well, let's tell you more about all that's happening in Venezuela at this point of time. Now, the operation to capture Maduro was carried out by the Army's Delta Force and Elite Special Operations Unit. The helicopters that descended on Maduro's compound came under fire. That's what was rather announced by General Dane Kane, the chairman of the Joint Chiefs of Staff. But US forces and the FBI eventually entered the compound.
Maduro and his wife then gave up and were taken into custody. Satellite imagery shows before and after the US strikes at the Puerto Tiona, and that's the image of the before and the after images on your screens right now. Satellite images on December 22nd shows an overview of Puerto Tiona military complex. It's showing buildings and equipment prior to strike damage. Meanwhile, satellite images from Guantor shows damage to vehicles and equipment at Puerto Tiona military base in Caracas after strikes on January 3rd. So the US strikes in Venezuela, as well as the subsequent indictment of the Venezuelan president and his wife, they have now triggered a slew, perhaps a wave of reactions globally, with many global superpowers coming out and condemning what they see as an overreach by the United States of America. Bombs raining down in the dead of night, a detained president and a country thrust into chaos. The US launched strikes against Venezuela, sending shockwaves far beyond Latin America. Much of the world calls the move illegal and dangerous, while others celebrated an act that liberated Venezuela. Global reactions reveal a world deeply divided over power, precedent, and international law. Russia condemned the operation as armed aggression, accusing the US of violating Venezuelan sovereignty. China too followed, accusing the US of destabilizing an already fragile region, while Iran called out another case of US unilateralism. In Europe, responses were cautious yet uneasy. The European Union urged restraint and said any change in Venezuela must be peaceful and lawful. Spain offered to mediate, while France called US military action illegal. The UK PM Keir Starmer made it clear UK was not involved in the US strikes on Venezuela. At the United Nations, the Secretary General warned Operation risks setting a dangerous precedent, one that could weaken the very rules meant to prevent global conflict. Across Latin America, reaction was sharply split. Cuba labeled the operation criminal, accusing Washington of state terrorism. Mexico, Colombia, Brazil too condemned a move they called an assault on international norms. Back in the United States, Democrats across Washington slammed Trump's move, calling the military operation reckless, illegal, and a dangerous overreach. New York Mayor Zohran Mamdani condemned the strikes as an act of war. Yet many celebrated Trump's decisive move. Israel welcomed the strikes and Maduro's removal. Argentina too broke ranks, welcoming the end of an authoritarian rule in Venezuela. Venezuelan opposition leader and Nobel Prize winner Maria Corina Machado hailed the US operation, calling Maduro's capture a historic turning point and a step towards restoring democracy in Venezuela. From Moscow to Mexico, the reaction is clear. This is not just about Venezuela, it is about whether powerful nations can decide the fate of weaker ones. And what happens to international law when the strongest decide to break them. Bureau Report, NDTV. On that note, we slip into a very short break, but come right back. Lots lined up for you here on NDTV 24/7.